travel with Tony. Buddha Tooth Relic Temple, that is Chinese Buddhist Temple, Singapore. I was hoping to see the tooth of the Buddha when I visited the temple, but had no chance to see it. You have to go to the 4th floor and wait for certain times to see the tooth relic. It is not open 24 hours. There are certain times which you have to follow strictly. I was really impressed with the overall concept design of this temple. Conceptualized and designed by Venerable Shi Fa Zhao together with Yi Architects, that is local architectural firm, the BTRTS, had been developed incorporating the best of Tang Dynasty and the Buddhist mandala with great accuracy and authenticity. According to Sri Lankan legends, when the Buddha died, his body was cremated in a sandalwood pyre at Kusinara in India, and his left canine tooth was retrieved from the funeral pyre by Arahat Khema. Khema then gave it to King Brahmadatta for veneration. It became a royal possession in Brahmadatta's country and was kept in the city of Dantapuri, present-day Puri in Orissa. That's India. A belief grew that whoever possessed the sacred tooth relic had a divine right to rule that land. Wars were fought to take possession of the relic. 800 years after the Buddha's death, in the 4th century CE, the tooth came into the possession of King Guhasiva of Kalinga. Which roughly corresponds to the present-day state of Orissa. How the Buddha tooth relic reached Singapore is not known. The sacred tooth relic came to be regarded as a symbolic representation of the living Buddha, and it is on this basis that there grew up a series of offerings, rituals and ceremonies. If you happen to be in Singapore, you must visit this temple. Buddha Tooth Relic Temple is a beautiful temple. Offerings, rituals and ceremonies. If you happen to be in Singapore, you must visit this temple. Buddha Tooth Relic Temple is a beautiful temple. As of 2010, 33.6% of Singaporeans identified themselves as Buddhist. Adherents of Buddhism are mostly of the Chinese majority ethnic group, although small minorities of Sinhalese and Thai Buddhists do exist as well. Mahayana Buddhism is the most prevalent form of Buddhism in Singapore. Sizable communities following other traditions include Theravada and Tibetan Buddhism. The representative organization of Buddhism in Singapore is the Singapore Buddhist Federation. Presence of Buddhism in Singapore was evident during the Sri Vijayan times. In line with ancestral practices, many of the Chinese inhabitants also mix in Taoism and Confucianism to Buddhism. By virtue thereof, there is a strong trend blending towards Thai Buddhism, especially amongst the younger generation Singaporeans, which is seen to bear cultural similarities for its ability in encompassing Chinese culture and practices
as represented in Taoism. Buddhism as represented by Theravada Buddhism, the oldest Buddhist school of thought, is seeing a potent growth in Singapore in the past decade. It is also noted that there is a significant increase of interest in the Buddhist teachings, that is Dharma, practices and customs, that is chanting, meditation and offering formality. With a younger and more informed population, Buddhism is seen as the most viable religion in Singapore. The Singapore census includes detailed data on religion and ethnicity. Figures on Buddhism in 1980 shown that 27% of Singaporeans are Buddhist, up to 31.2% in 1990 and 42.5% in 2000. In Singapore, how many people follow Buddhism? What is the population for Buddhism in Singapore? Maybe in Singapore, there are many religions like Islam, Christian, Mahayana, and then Chinese Buddhist, Little louder, please. Chinese Buddhism, and Indian Buddhism also. So this place is gathered from many countries. So this country, many other countries' person are staying in Singapore. So maybe if I explain how many percentage are following Buddhism, I cannot tell to you. However, so because yeah. If I explain the 20 or 30 percentage, 20 or 30% of however, full population. Include Indian Buddhism and then Chinese Buddhism. Many persons are following to Buddhism. Buddhism. Okay. And what is the difference between this white color Buddhism dress and yellow Buddhism dress? Yellow, orange Buddhism. What is the difference? Maybe Buddhism. It is nothing to say that Buddha was born in India.
जैसा कि आप जानते हैं कि सिंगापुर में भी काफ़ी इंडियंस हैं, तमिलियंस हैं, मोमेडियंस हैं, सरदार सिख भाई भी बहुत सारे हैं। सर गुरुद्वारे भी हैं काफ़ी यहाँ पे? 7 गुरुद्वारा है जी। 7 गुरुद्वारे हैं। 7 गुरुद्वारों में से एक गुरुद्वारे में हम लोग इस वक्त हैं सिंगापुर में। यहाँ के मैनेजर गुरमुख सिंह जी हैं, कुछ जानकारी देंगे सिंगापुर के बारे में, सिख भाइयों के बारे में, इंडियंस के बारे में। सर आप यहाँ पे कितने सालों से रह रहे हैं? करीब 25 साल से। 25 साल से? अच्छा, तो आपकी फैमिली भी यहीं पे है? यही है। अच्छा, तो आप इंडिया में कहाँ रहते हैं? पंजाब तरन तारण। पंजाब तरन तारण से। तो यहाँ पे आप गुरुद्वारा संभालते हैं? हाँ। अच्छा जी। तो सर हाउ डू यू फाइंड सिंगापुर? इट्स वेरी गुड, वेरी सेफ कंट्री। वेरी सेफ, वेरी ब्यूटीफुल, neat and clean, full of law and order. Yes. Its religious facilities consist of a huge prayer hall, dining hall and a kitchen. The prayer hall is a column-free, air-conditioned and fully carpeted, and the hall is placed under the 13-meter high dome. The second floor can accommodate 400 to 500 sitting and 1500 standing people. दोस्तों अभी हमारे साथ हैं मिस्टर गुरमीत सिंह, एक्चुअली इज फ्रॉम पंजाब लुधियाना एंड ही इज आप बिजनेस में? बिजनेस। ही इज इनटू इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट। इंडिया से आप सिंगापुर टू इंडिया से कुछ सामान बेचते हैं और सिंगापुर से रिटर्न में कुछ सामान बेचते हैं। अच्छा, जो चीज़ों की डिमांड सिंगापुर में है और कुछ चीज़ों की डिमांड इम्पोर्टेड चीज़ें जो है वो इंडिया में डिमांड है। अच्छा, तो आपका सिंगापुर में बार बार आना जाना होता है? हाँ, एवरी मंथ, तकरीबन हर महीने में। अच्छा, एवरी मंथ आप आते हैं सिंगापुर में। हाउ डू यू फाइंड सिंगापुर? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी वेरी वेरी। बहुत खुशी मिलती है। स्मॉल कंट्री। हाँ, है तो छोटी सी कंट्री है। मतलब तरक्की सारे नाल वध कीती। हाँ, तरक्की तो बहुत की है सिंगापुर ने। डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ट्रेन्स वगैरह काफ़ी अच्छी हैं। ऑल बसेस है, ऑलमोस्ट ऑल एयर कंडीशन बसेस हैं। टैक्सीज अच्छी हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम, इंफ्रास्ट्रक्चर इज वेरी गुड। वेरी गुड। इवन सिंगापुर पीपल आर वेरी गुड, आई थिंक वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट। मतलब बहुत ही रास्ते में कहीं पे मैं कुछ एड्रेस वगैरह पूछ रहा था तो बहुत ही प्यार और इज्जत से बता, बहुत ही अच्छी तरह से गाइड कर रहे थे। A bungalow was purchased for a new temple at Queen Street in 1912 with the assistance of Sindhi merchant by the name of Wasiamal. The Sikhs used the land to build a Gurudwara. The Gurudwara later became known as Central Sikh Temple when other temples were established. The name Vada Gurudwara means the big temple in English. Central Sikh Temple is the first Sikh Gurudwara in Singapore. यहाँ पे मैंने देखा कि काफ़ी लोग, जैसे इंडिया में कुछ परेशानियां चेहरे पे नज़र आती हैं, लॉ एंड ऑर्डर बराबर से नहीं, हालांकि इंडिया तो अपना ही खुद का ही देश है, लेकिन यहाँ का जो सिस्टम है, बिकॉज इट्स अ वेरी स्मॉल कंट्री, तो दे आर एबल टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, द क्लीनलीनेस, द सिस्टमेटिक रूल्स एंड रेगुलेशंस, एवरीथिंग। हाउ डू यू फाइंड सिंगापुर एज अ होल? एक मतलब रहने लायक कैसे लगता है आपको इंडिया से दूर? रहने लिए अच्छा है, बहुत। इसमें किसी को भी किसी का कोई डर नहीं है। पूरी सेफ्टी है। सेफ्टी पूरी है। रात को भी कितने बजे भी लड़की है जो कि कहीं भी घूम सकती है, किसी को कोई खतरा नहीं होता है। हाँ, अच्छा। तो बाकी कानून सभी के लिए एक है। कानून सभी के लिए एक है। ये नहीं है कि ये इंडियन है इसके लिए और है या दूसरा उसके लिए कुछ और है। अच्छा। तो सभी को एक साथ व्यवहार करते हैं। तो एज अ पर्सनल आपका व्यू है कि यू आर एंजॉयिंग योर लाइफ इन सिंगापुर? यस। अच्छा अच्छा। और आपके बच्चे सभी वो भी एंजॉय कर रहे हैं सिंगापुर में? एजुकेशन सिस्टम कैसा है सर यहाँ पे? एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है इंटरनेशनल लेवल पे। अच्छा। The British decided to recruit Sikh migrants as security forces in the Straits settlements. Sikhs began to arrive in Singapore in 1881 to form a Sikh contingent of the Straits Settlement Police Force. The first Sikh temple or Gurudwara was set up in the police barracks, but it soon could not accommodate the growing Sikh community. मतलब ऐसा नहीं है कि फॉरेनर आ रहे हैं तो उनको मिसगाइड किया जाए, नहीं मेरे ख्याल से टैक्सी वाले भी जो फेयर है वो एग्जैक्ट फेयर जो मीटर के हिसाब से, हेराफेरी नहीं है, चीटिंग नहीं है। हाँ, है तो अच्छी कंट्री, मैंने देखा छोटी सी कंट्री है लेकिन डेवलपमेंट बहुत अच्छी है।
इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा है यहाँ पे। तो आप एवरी मंथ मतलब आते हैं यहाँ पे? अच्छा, तो खाने पीने की तो दिक्कत है नहीं? इंडियंस बहुत हैं यहाँ पे, रेस्टोरेंट्स, पंजाबी रेस्टोरेंट्स भी हैं तो बहुत ज़्यादा है। लिटिल इंडिया में है इस टाइम। हाँ, लिटिल इंडिया में है। ये जो खाने पीने का है सामान, हर इंडिया का जो इंडिया में वही लिटिल इंडिया में है। अच्छा अच्छा, हर चीज़ मिल जाती है। हाँ, वो तो देखा मैंने, लिटिल इंडिया का मैंने राउंड मारा था एक कल, तो आई हैड बीन टू लिटिल इंडिया एंड सॉ मैनी तमिलियन, साउथ इंडियन, सरदार जी, मुस्लिम भाई, काफ़ी इंडियंस हैं, तो ऐसे लग ही नहीं रहा था कि मैं इंडिया के बाहर हूँ। स्मॉल इंडिया है, लिटिल इंडिया जो नाम है वो नाम वाकई उसको जस्टिफाई करता है। लिटिल इंडिया मतलब उसमें इट हैज़ बिकम अ कॉस्मोपॉलिटन स्मॉल एरिया। उसमें सब सिख भाई नज़र आए थे, गुरुद्वारे हैं आपके, तमिलियंस के लिए, साउथ इंडियंस के लिए मंदिर बहुत है यहाँ पे, मॉस्क बहुत है, मस्जिदें बहुत हैं, बहुत अच्छा है। तकरीबन हर इतनी छोटी सी कंट्री ने सबको एडजस्ट कर लिया, रेस्पेक्ट सबकी है, ह्यूमैनिटी है, एक इंसान को इंसान समझा जाता है, बहुत अच्छा है। रूल बहुत अच्छे हैं, रूल्स अच्छे हैं, सिस्टमेटिक है सब, कोई हॉर्न नहीं, आवाज़ नहीं आएगी गाड़ी की। हाँ हाँ हाँ, साइलेंस। अच्छा अच्छा। हाँ, वो तो The Gurudwara is the main place of worship for the 15,000 Sikhs in the country and is also known as Vada Gurudwara. In 1849, after the British conquered the Indian state of Punjab, many Punjabis began to migrate. The building is separated from the busy traffic along Serangoon Road by its 3 external sides with a 4th internal wall that opens to a decorative pool. और सिंगापुर में सिख भाई कितने हैं? सिख भाई तकरीबन अभी 14-15 हज़ार के करीब है। 14-15 हज़ार सिख भाई हैं यहाँ पे, सिटीजन्स हैं, प्रॉपर सिटीजन्स हैं। बाकी जो लोग घूमने वगैरह आते हैं, घूमने वगैरह आते हैं जो इधर वर्क परमिट में, उसकी तो गिनती है। अच्छा, वर्क परमिट में तो वो तो फिर उनकी गिनती नहीं होती है। बाकी जो परमानेंट सिटीजन्स हैं वो 14-15 हज़ार सिख भाई हैं यहाँ पे। अच्छा, तो आपके हिसाब से सभी लोग यहाँ पे जो आते होंगे, विचार तो होता होगा हमसे, कभी बात होती होगी, सभी खुश हैं सिंगापुर में? सभी खुश हैं। अच्छा, कोई तकलीफ नहीं है? नहीं। अच्छा, और कुछ जानकारी देना चाहेंगे आप सिंगापुर के बारे में? यहाँ पे घूमने लायक टूरिज्म के लिए प्लेसेस बहुत अच्छे हैं। बहुत ठीक है, जैसे ये सेंटोसा है, यूनिवर्सल स्टूडियो है, ये जू है, नाइट सफारी है। जू है, नाइट सफारी है। नाइट सफारी में जैसे पूरे जो है रात को जैसे जानवर दिखते हैं। हाँ, कल मैं गया था वहाँ पे नाइट सफारी में, तो नेचुरल लाइफ उनकी दिखाई गई है, नेचुरल कैसे जीते हैं जंगल में। अच्छा, तो और भी काफ़ी कोई तरह है जिसको हापर विला बोलते हैं, उसको हापर विला, उसको पंजाबी में नर्क स्वर्ग भी कह देते हैं। अच्छा, वो चाइनीज के लिए पूरा बनाया हुआ है। अच्छा, वो कहाँ पे? वही तो पसा पंजाब है, पसा पंजाब रोड। अच्छा, तो मतलब सिंगापुर में लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, बहुत अच्छी लाइफ है, डिसेंसी है बहुत। अच्छा, In the tower there is a small dormitory, rooms for tourist residences for up to 4 priests, a classroom for religious studies, a library and museum dedicated to articles, books related to Sikhism as well as administrative offices. हाँ, वो तो देखा है, सिस्टमेटिक है, लॉ एंड ऑर्डर है, तभी तो रहने का मज़ा है। लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन नहीं करेंगे, तोड़ेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वो जंगल हो जाएगा। तो अच्छा है, चलिए अच्छा है। एयरपोर्ट बहुत अच्छे हैं। हाँ, एयरपोर्ट तो बहुत अच्छे हैं यार, इंटरनेशनल एयरपोर्ट्स हैं, चंगी एयरपोर्ट तो वर्ल्ड फेमस एयरपोर्ट है, काफ़ी यूरोपियंस फॉरेनर्स देखे मैंने। नहीं है, इमिग्रेशन में भी आपको प्रॉब्लम है? नहीं, आराम से बहुत फटाफट काम हो गया, मतलब मेरे ख्याल से हार्डली इट टेक्स 10 मिनट्स टू गेट अ क्लियरेंस। एयरपोर्ट पे जैसे ही हम लोग उतरे थे तो फटाफट सब काम हो गया था, वीज़ा कोई इशू नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ही मतलब वेरी हेल्पिंग पीपल, नेचर बहुत अच्छा है इनका सिंगापुर। Central Sikh temple was reconstructed in 1921 and the congregation hall was located on the first floor and other facilities on the first floor too. It is a custom for gurdwaras to provide food and lodging for their guests. Besides being a place of worship, the temple was also used for welfare and education services. The temple houses more than 15,000 people and is meant to be the main religious and community temple of all the Sikh gurdwaras in the nation.